नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से। तो आज इस बड़ी कवरेज में हम मुआयना करने वाले हैं कि यूएस में जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं उसका भारत पर असर क्या होगा। हिलरी और ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन इस समय बढ़त हासिल है ट्रंप को और इसी का इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 4% नीचे, 350 पॉइंट्स नीचे, और डाउ फ्यूचर्स 3.5% नीचे, 600 से ज्यादा अंकों की गिरावट डाउ फ्यूचर्स पर इस समय देखने को मिल रही है। बाकी एशियन इंडाइसिस पर भी सिमिलर रुझान देखने को मिल रहा है। मार्केट्स वर नॉट प्रिपेयर्ड कि इतना गैप होगा ट्रंप और हिलरी के बीच में। एंड हालांकि कुछ लोग अभी जो कह रहे थे कि कैलिफोर्निया के नतीजे आना बाकी है, और वो यूजुअली इट्स अ स्विंग स्टेट क्योंकि वहां से काफी सीट्स आती है, लेकिन आई डोंट थिंक, देखिए मार्केट का जो डर है वो यही है कि कैलिफोर्निया पता नहीं कितना कवर कर पाएगा। हालांकि इट्स अ डेमोक्रेट स्ट्रांग होल्ड, पर वो पता नहीं कितना मदद कर पाएगा। अब देखिए 150 सीट्स पर ट्रंप आगे है एंड 109 पर हिलरी। जो टैली बढ़ रहा है वो ट्रंप के खाते में ज्यादा बढ़ रहा है। क्रिस गोपालाकृष्णन इस बीच हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। क्रिस, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड अप्रिशिएट योर प्रेजेंस विद अस। This is unexpected what Trump has done, and you know, look at the gap, 150 for Trump so far and 109 for Hillary, or unfortunately the tally for Hillary is increasing very slowly. Right. So there was always a chance that Trump would win. I remember actually seeing one of the channels saying that there's a 30% chance that Trump would win. And you have the incident that happened in UK with Brexit, which was also unexpected. But we have to wait. Everybody is saying this is going to be very close to call, and then look beyond this. I had in your channel said that if Mr. Trump wins, there is uncertainty because he is an unknown factor. This is the first time he is going to be running a government, any form of government, and there will be uncertainty of how he is going to govern. There are a lot of things he has said about overturning, for example, Obamacare. He has made various statements on the immigration side. So these are things that need to play out if Mr. Trump wins. मतलब क्रिस, अब ऑलरेडी आपने पहले भी एक बार कहा था कि जब ट्रंप जीतेंगे तो शायद थोड़ा वापस चिंता की विषय होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, बीइंग एज एन आईटी वेटरन, आपको लगता है कि बोर्ड रूम में वापस एक बार आईटी कंपनीज को बैठना होगा, अपनी पॉलिसीज को भी या यूएस के अकॉर्डिंग मैच करना होगा? क्योंकि अभी तक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क को लेकर ही चिंता है, बिजनेस को लेकर ऐसा चिंता नहीं है। बट आई थिंक इज दैट की पॉलिसी क्या बनती है ट्रंप की तरफ से? Yes, so everybody will be watching the statements he makes. If he wins, they will go back to discuss internally what their responses are going to be. Immigration will be the biggest worry. Movement of professionals. So IT companies don't look at immigration. IT companies look at the movement of professionals. That will be watched very closely. H-1B visas, E-1 visas, and things like that will be watched very closely. And this poses potentially an interesting challenge. Well, not interesting. It does pose a very big challenge for the IT companies to see how this plays out. Also, Chris, now the other part, which Indian market is factored in right now, is the black money announcement that government has done. कल जो उन्होंने घोषणा की है. Now I have a very basic question here. If you read the release of the finance ministry, they have admitted that the 500 and 1,000 rupees notes or the currency was being used, in shadow economy to promote corruption, the terror funding and all. And then, in the same release, government has again stated that within 2 days they are coming up with new high denomination currencies, 500 and 2,000 rupees. Isn't it self-defeating to some extent? Because this has really spooked the market, that the step is very nice and you are trying to block the tap for black money, but then it is contradictory because within 2 days ये करने के आप नई same denomination की currency लेकर आ रहे हैं, in fact a higher one also, 2,000 रुपए की. What's your take on that? So what they are hoping, and I think they will succeed, is to introduce the new notes in a formal
economy manner. That means that you have to now go to a bank to get the new notes. That means these things will be recorded, and they will know who has these notes. And that is how I believe that you reduce the circulation of black money and increase the formal economy. So I am actually optimistic that this is going to curtail black money, at least in the near term. Of course, over time, again it will start building unless and until we reduce cash transactions. I hope that this will trigger reduction in cash transactions, use of mobile wallets, use of checks, credit cards, and things like that. Right, Chris, thanks for joining us. Appreciate your presence. Thank you so much. इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इंडिकेटिव टिक्स के साथ साथ जो आ रही है वो ये है कि यूएस में वन ऑफ द क्रिटिकल स्टेट्स जिसे कहा जाता है यानी स्टेट ऑफ ओहायो, वहां पर ट्रंप ने विक्ट्री हासिल की है। ये बड़ी खबर है बिकॉज ओहायो वाज वन ऑफ द स्विंग स्टेट्स और यहां पर ट्रंप का आगे निकलना अच्छी खबर नहीं है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ये शॉर्ट्स आप इस समय देख रहे हैं, आपको दिख भी रहा है इंडिकेटिव टिक्स बिल्कुल जहां पे आपको इंडाइसेस यानी कि निफ्टी ही अपने आप में 5% के आसपास टूटा। और आप सभी फ्रंटलाइन काउंटर्स देखें, शायद ही कोई फ्रंटलाइन काउंटर ऐसा होगा जो कि 5% के आसपास ना टूटा हुआ होगा। सभी के अंदर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। तो यही इंडिकेशन क्लियरली यहां पे देखने को मिल रहा है कि जो ट्रंप की विक्ट्री, खासकर आप जो जैसे आप ओहियो के बता रहे हैं कि क्रूशियल स्टेट्स हैं, ये सारी स्टेट्स के अंदर हमने तेज गिरावट फिर से आते हुए देखी है। और आप इसमें देखें डोनाल्ड ट्रंप ओहियो में भी आगे चल रहे हैं। ये खबर भी अभी अभी आई है और अलग अलग, माफ कीजिए, ये जीते हैं। इनफैक्ट जो और इस समय खबर आई है वो यही है दैट ओहायो में ट्रंप जीते हैं और ये बड़ी खबर है बिकॉज इसे बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जा सकता था। इसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पर देखने को मिलेगा। इस बीच लेट्स टेक अ लुक एट द रूपी। 66.61 के मुकाबले 66.80 पर रुपया खुला है, यानी ऑलमोस्ट 1% का ड्रॉप यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड लुक एट द इंडाइसेस, हैवी सेल ऑफ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर इंडिकेटिव टिक्स में यहां पर देखने को मिल रहा है। एज वी स्पीक 600 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है और 427 पॉइंट नीचे निफ्टी। इस समय जमाल मैकले हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जमाल, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। इट सीम्स दैट मिस्टर ट्रंप हैज ट्रम्प्ड द ग्लोबल मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, and in a way, at least on the equity markets, there is a serious sell-off that we are looking at. It appears that way. I mean, Dow futures are down 500 points. And it's frankly, I'm watching this and I have to admit, I'm shocked and I am, Baba, हमें भी सीखना है. We all believe what we believe, but ultimately it looks like it's across the board. There is huge support for Mr. Trump. Most of it is from rural America, and ultimately, while he seemed like this nuts guy, I still think he's a nuts guy. But ultimately, this is what people want. And America is still the biggest force in the world, so there is going to be a fundamental change in the way things are done. Now, I think, for a long time, I've been speaking with you, a lot of people feel that the whole global economy needs to have a structural change. But whether this is the guy to drive it, I don't know. But a lot of volatility, a lot of uncertainty ahead. Right. Mr. McClay, the other trigger, very quickly, I won't take much of your time. कल ये जो सरकार ने अनाउंसमेंट की है on the black money, नाउ ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इम्पैक्ट आप कोई लास्टिंग इम्पैक्ट देख रहे हैं करेंसी मार्केट पर? एंड सेकेंडली, isn't it self defeating because एक तरफ सरकार ने बंद तो की करेंसी, लेकिन दूसरी तरफ जो नई करेंसीज हैं 500 की और 2000 रुपए की नई डिनोमिनेशन की नोट्स, वो 2 ही दिन में आ रही है। नहीं, but the fact is the process, if you are sitting on cash, you are stuck, right? You have to either pay tax or whatever, right? Now the big question will be when the new denominations come in, what additional processes will there? See, people are going to be a little frightened after this stuff. So the whole process of, let's say you are carrying
10,000, 1,000 rupee notes to bribe somebody. Now you will have to carry 5,000, 2,000 rupee notes to bribe somebody. But I mean, people are going to. My sense is it is a change. It is a fundamental change, and it will be very, very, very good for the economy. But short term, of course, there will be issues. There will be liquidity issues. I feel asset prices will come down, real estate prices, for example. But I think although, just like I felt about the global asset prices, I think it's good. Asset prices are too high. You know, house prices are much too high. Why? Because people are just sitting, it's funded with a lot of black money, right? So prices of assets will come down, which is a good thing, right? Inflation will come down, which is a good thing. The whole issue is, as you're pointing out, okay, so what is the next steps? How do you prevent this sort of whole huge parallel economy from regenerating? Right? I think things like GST are very useful. So I think that, I mean, much as, I am not very generally pleased with Mr. Modi, you have to give credit where it is due. He's doing some great things. Just like I'm not generally pleased with Mr. Trump, but you have to give credit where it is due. Right. Maybe a right step on a wrong day. But thanks for joining us, Mr. Mehta. It's always the right time. Okay, good luck. Bye. Thank you so much.